हेलो एवरीवन। हेलो वाले। आज हम लोग सीखेंगे कि प्लेस के बारे में बोलने के लिए कौन से प्रेपोजिशंस यूज किए जाते हैं। टुडे वी लर्न द प्रेपोजिशंस टू रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस। There are two ways to express the location. When there is no movement, you will use ish, been, then followed by the preposition. When there is movement, you will use yush, gehe, followed by the preposition. एक्सप्रेशन प्लेस के बारे में बोलने के लिए हम दो सेंटेंसेस की मदद लेते हैं। जहां पर मूवमेंट नहीं है उसके बारे में बोलने के लिए हम लोग यूज करेंगे इश बिन, देन जो भी प्रिपोजिशन आएगी। एंड जहां पर मूवमेंट है वहां पर बोलने के लिए हम लोग यूज करेंगे इश गेहे, देन जो भी प्रिपोजिशन आएगा। क्वेश्चंस क्या रहेगा? जहां पर मूवमेंट होगा वहां पर हम लोग यूज करेंगे वो हिन, एंड जहां पर कोई मूवमेंट नहीं रहेगा वहां पर हम लोग यूज करेंगे वो। द क्वेश्चन वर्ड्स टू रिप्रेजेंट मूवमेंट इज वो हिन, एंड व्हेन देयर इज नो मूवमेंट वी विल यूज वो। फॉर एग्जाम्पल, to show when there is no movement, we'll use the phrase wo bist du और वो जिन जी। जहां पर मूवमेंट नहीं है वहां पर प्लेस के बारे में पूछने के लिए हम यूज करेंगे वो बिस्ट दू या फिर वो जिन जी। एंड जहां पर मूवमेंट है वहां पर प्लेस के बारे में पूछने के लिए हम लोग यूज करेंगे वो हिन गेज दू या फिर वो हिन गेहन जी। To express movement, we'll ask the question wohin gehst du या फिर wohin gehen sie. So the prepositions which are used to talk about the places, here are they. When there is no movement, we'll use ish bin followed by the place. For example, to show on beach, you will use am near. To show you are at the work, you will use auf der Arbeit. To show at house, we'll use zu Hause. At the station, in Bahnhof. At doctor's place, beim Arzt. In park, im Park. At a hospital, we'll use im Krankenhaus. At police station, we'll use bei der Polizei. At an island, we'll use auf einer Insel. At a market, we'll use auf dem Markt. In office, we'll use im Büro. When we are in Deutschland, in Germany, we'll use in Deutschland. At a party, we'll use auf einer Party. In Switzerland, we'll use in der Schweiz. And when there is movement, we'll use ich gehe, followed by the preposition. At the beach, we'll use ans Meer. At work, we'll use zur Arbeit. At house, we'll use nach Hause. At train station, we'll use zum Bahnhof. At doctor's place, we'll use zum Arzt. At an hospital, we'll use ins Krankenhaus. In park, we'll use in den Park. At police station, we'll use zur Polizei. At an island, we'll use auf eine Insel. At market, we'll use auf den Markt. At office, we'll use ins Büro. In Germany, we'll use nach Deutschland. At a party, we'll use auf eine Party. In Switzerland, we'll use in die Schweiz. So here are two practice questions for you all. Sind Sie auf dem Markt? And wann gehen Sie zur Arbeit? यहाँ पर आप लोगों के लिए दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो। Here are two practice questions for you all, the answer to which you can write in the comment section. Thank you everyone for watching my videos. Like, share and subscribe for more such content.